بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Student, this is your chemistry period. Take out chemistry book of grade 10. Students, take out page 24. Arrhenius concepts of acid and bases. But before starting Arrhenius concept, you know about acid and bases? We discussed in our previous lecture about acid and bases. Acid are substance which having sour taste, and bases are substance which having bitter taste. Acid conduct electric current, bases also conduct electric current. Acid turn blue litmus paper into red, while bases turn red litmus paper into blue. Now we start Arrhenius concepts of acid and bases. In Arrhenius concept, Arrhenius explain aqueous solution of acid and bases. What is aqueous solution? Students, you know about aqueous solution? The solution of acid in water and the solution of bases in water are called aqueous solution of acid and bases. जब हम कोई भी solution, किसी चीज का भी solution पानी में बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं aqueous solution of acid and bases. Now, according to Arrhenius, an acid is a substance that dissociate in aqueous solution and give proton. जब भी हमारे पास ऐसे सब्सटेंस हो जिसको हम पानी में डालें और वो डिसोसिएट हो जाए और वो हमारे पास क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे दें, तो इसको ऐसे सब्सटेंस को एसिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ जनरल एग्जाम्पल ऑफ एसिड. when Ha dissolved in water, so it give H positive and negative. This is called hydrogen ion. जब हमने Ha को पानी में डिसॉल्व किया, जो कि हमारे पास एक एसिड था, इसको डिसॉल्व करने में हमारे पास H पॉजिटिव और A नेगेटिव आया, तो मीन के हमारे पास जो Ha है ये क्या है, ये एसिड है. एग्जाम्पल 2, हाइड्रोजन क्लोराइड. व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, इट गिव हाइड्रोजन पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. सो हाइड्रोजन क्लोराइड इज आल्सो एसिड बिकॉज Arrhenius ने क्या कहा कि हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट होके हमें हाइड्रोजन दे दें, तो वो सब्सटेंस हमारे पास क्या होंगे, एसिड होंगे. द थर्ड एग्जांपल इज HNO3. HNO3 is nitric acid. When nitric acid is dissolved in water, so it give H positive, NO3 negative. आप लोग यहाँ पर भी देखें कि इसमें भी अगर हम इसको पानी में डिसॉल्व कर लें तो इसने भी हमें क्या दिया, हाइड्रोजन आयन दिया. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये HNO3 है ये भी एक एसिड है. और कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है. अदर एग्जांपल ऑफ एसिड इज एसिटिक एसिड. Acetic acid when dissolved in water, so it give two types of ion. One is hydrogen ion. It also give hydrogen ion. So therefore, this is also acid according to the Arrhenius concept. Arrhenius concept explain aqueous solutions of acid and bases. Aqueous solution are those solution which made in water. An acid is a substance that dissociate in aqueous solution and it give hydrogen ion.
For example, this is a general example that HAQ, H positive and negative. So this HA is acid. The other example is hydrogen chloride. When this dissolve in water, so it give hydrogen positive, Cl negative. So HCl is acid. HNO3, when it dissolve in water, so it give H positive, NO3 negative. So HNO3 is acid called nitric acid. CH3COOH, when it dissolve in water, so it gives CH3COO negative, H positive. So this is also acid called acetic acid. According to Arrhenius concept, bases. Bases is a chemical substance that dissociate in aqueous solution and it give hydroxyline, OH negative called hydroxyline. हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में अगर हम डिसोसिएट कर लें, पानी में उसका सोल्यूशन बना लें, तो वो हमें एज अ रिजल्ट क्या दें? हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव. तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. When sodium hydroxide dissolve in water, so it give Na positive, OH negative. It give OH negative. Other example, KOH, potassium hydroxide. When it dissolve in water, so it give potassium positive, OH negative. It give OH negative. The third example, ammonium hydroxide. When it dissolve in water, so it give NH4 positive, OH negative. Students, it also give OH negative. So these substances are bases because when it dissolve in water, it dissociate and give OH negative. Students, Arrhenius concept explain aqueous solution of acid and bases. Aqueous solution are the solution of water and acid and bases. Acid, according to the Arrhenius, acid is a chemical substance that dissociate in aqueous solution and it give hydrogen ion. For example, HA is an acid. When it dissolve in water, so it give H positive and negative. HCl is an acid. When it dissolve in water, so it give H positive, Cl negative. HNO3 is acid. When it dissolve in water, so it give H positive, NO3 negative. CH3COOH is acid. When it dissolve in water, so it give CH3COO negative and H positive. These are substances give H positive hydrogen ion. Therefore, these all substances are acids. While according to the Arrhenius concept, basis is a chemical substance that dissociate in aqueous solution and give hydroxyline. Look at example. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide. When these substances dissolve in water, so it dissociate and give hydroxyline. Therefore, these substances are bases. Students, now we proceeded toward limitations of Arrhenius concept are some drawbacks of Arrhenius concept. The first one drawback is this concept is limited to aqueous medium. Mean इसने हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताया लेकिन सिर्फ एक्वस मीडियम में उसका नेचर. नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस का नेचर क्या होगा? It cannot explain the nature of acid and bases in non-aqueous medium. So this is the one limitation of
Arrhenius concept. The other limitation is this concept is limited to hydrogen ion and hydroxyl ion. हमारे पास कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता, या कुछ बेसिस ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होता. सो आर्हेनियस ने उन एसिड और बेसिस के मुतालिक कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी. Third one limitation, it not explain the acidic nature of carbon dioxide while the basic nature of ammonia. यहाँ पे आप लोग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड में तो ना हाइड्रोजन है और अमोनिया में हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर व्हाइल अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. सो आर्हेनियस ने इनके नेचर्स के मुतालिक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया और उसने सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी है कि हमारे पास एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. Student, today we discuss about Arrhenius concept of acid and bases. In Arrhenius concept, we discuss about acid, that acids are the substances that dissociate in aqueous solution and give hydrogen ion, while the bases are substances that dissociate in aqueous solution and give hydroxyl ion. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.